responsible for the horrific killings, and they have to be called killings, of 3 young IAS aspirants in the waterlogged basement of one of India's oldest UPSC coaching centers. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo Story. The images of 3 young lives swallowed up by criminal negligence and corruption have jolted India. But there is cynicism about whether anyone will be seriously punished for the killings of these 3 young faces that you see on your screen. Nevin, Shreya, and Tanya, who could not survive as the water gushed into the basement of the Rouse IAS study circle where they were preparing to become civil servants for India. Not just were their dreams cut short, their lives were cut short as well. And what is shocking is that one of the IAS aspirants, Kishore Kushwaha, had actually complained to all of the authorities in the month of June about the dangers that the basement posed, and had even followed up with reminders on the 15th and the 22nd of July. Those warnings were ignored, and these are the images set up as a makeshift memorial as students sit on a 48-hour vigil. They say they will not move till justice is served. Look at that poster in the end. Can we just, if you look at that poster, the poster actually said, "The dream is dead." The dream is dead. What a placard for a young person to be holding up. I spent the day today with the protesters, and I can tell you that there is anger, grief, suffering, sorrow, fear on the ground. There are many questions and a lot of disappointment. And the disappointment is with everybody. The disappointment is with the netas who are too busy fighting amongst themselves. The BJP and the Aam Aadmi Party are fighting. The disappointment is with the Aam Aadmi Party. The disappointment is with the BJP. The students want to hear from the Prime Minister. They want to hear from the Lieutenant Governor, who has now gone to meet them. They want to hear from whoever represents the Chief Minister. But most of all, they want to know why the warnings were ignored, why they were put in this situation at all. Remember, just a couple of days ago, there was another young IAS aspirant who died on the streets of the national capital from electrocution, this too as a result of the rains. A young boy did warn the system. He sent letters to the center, the state, and the local administration through the public grievance system portal of the government, and his warnings were ignored. So far, only the owner of the coaching agency, the owner and manager, has been arrested. What happens to all of the others? Let's introduce our guests on the program today as we look at this terrible, terrible issue that is unfolding before us. I want to welcome to the program Khemchand Sharma. Khemchand ji is, of course, a leader of the BJP. Namaskar, sir. Yashovardhan Azad, who's, of course, a veteran IPS officer. By the way, Mr. Azad, a lot of anger among students at the way police has behaved at the protest. So we'll talk a little bit about that. Neelam Krishnamurthy, she devoted her life to trying to get a higher standard of public safety after what happened at the Upar cinema, killed her 2 young children. And today she's saying कि कितना बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता. The fire department's NOC was in clear violation in the basement of the Rouse study circle. Also joining us from the Aam Aadmi Party is Reena Gupta. Welcome to the program. And finally joining us is a lawyer, Pranav Arora. Pranav Arora actually is a resident of Rajinder Nagar, where this tragedy, and it's not an accident, where these killings have taken place. So welcome everybody to the program. I'll be playing out clips of what the students said to me, but I will start to try and get an initial comment from Yashovardhan Azad in 2 capacities. We'll come to the police action and, you know, how the police has behaved a little later, Mr. Azad. But as someone who's been in the services, to see this happening to young people, all they wanted to do was to join the government and serve India. You know, what do you say about it? What do you even say? There are no words. I am absolutely heartbroken seeing what has happened, and this tragedy has unfolded at a time when a series of such mishaps are taking place. There are institutions, and in Delhi, I'll say there are multiple level of institutions, and we don't seem to have any responsibility taken for any of the actions taken.
You're absolutely right. In this particular case, let me tell you, some junior engineer has been suspended in the MCD, and of course, a couple of things here and there. But remember the Upar tragedy, what had happened, it had taken about 26 to 27 years. So, the callousness is visible. And I tell you later on in the discussion how it is really impossible, the kind of system we have deliberately put in Delhi to fix anybody accountable, and whoever is accountable does not want to take any responsibility. Whoever is accountable does not want to take any responsibility is something I heard again and again from the young protesters on the ground. Before we come to Khemchand ji and to Reena ji, Neelam ji, you lost your children in the Upar fire, and a lot of people of this generation have only watched your struggle through the Netflix series, Trial by Fire. You fought and fought and fought, and you made the point that when rules are violated, when otherwise wealthy, well-off promoters, whether be it of a cinema hall or a coaching circle like Rao's, when they knowingly flout violations, that's not an accident. That's culpable homicide. You fought, and you sent the Ansals to jail. But look at what's happened today. I want to show two documents on our screen. We have a young boy. He's from Gwalior. I spoke to him even this morning. He writes to the authorities. He writes to them in June through the government portal, and he sends two reminders in the months or on the 15th and the 22nd of July. If these warnings of Mr. Kushwaha, IAS aspirant, had been heeded, we would have seen 3 young people alive. If the fire department's rules had been followed, the NOC that was given for storage. It was not given to run any coaching center or have so many people in the basement. Neelam Krishnamurthy, as a mother who has lost her children, to see this happening decades later, Neelam, how do you respond? Barkha, I actually feel that I've failed in my endeavor. I tried very hard to have safety in public spaces, but nothing seems to bother. Nobody really seems to bother about it. Nobody cares. I think we need a lot of public participation. People must ensure that the public places that they're entering, they need to be fire safe. They need to be safe otherwise. But how are they going to be educated? So for that, I have a very good suggestion here, that these authorities who are issuing the NOCs, be it MCDs, be it Delhi Fire Service, this should be displayed on the website, and the owner and the occupier must display it on his website also. So the students who are enrolling there, if as a visitor, I'm visiting a shopping mall, I know, okay, this is fire safe. And if it isn't, we can always, we're sending us to children there, download it and keep it. And tomorrow if something goes wrong, not just the owner and occupier, even the government officials who have issued that NOC must also be prosecuted. And we should do away with the sanctioning of these higher authority, these officials. They say that if the senior officials have to be prosecuted, they must get sanctioned under 197. The sanction never comes. I'm sorry. Nobody gives sanction to prosecute these people. And we're talking about suspending government officials. What is suspension? 3 months? They still get some part of the salary. It means nothing. They need to be prosecuted, sent behind bars if you really want to, send a strong message. It's very unfortunate, Barkha, that in Upar case, I got the Ansals convicted. We proved it beyond reasonable doubt that they were responsible. Yet the Supreme Court allowed them to walk free, and also asked them to pay 60 crore rupees. For what? For building a trauma center in Delhi. You have, I'm sorry, Barkha, just let me make a point here. You have rewarded the very government which allowed Upar owners to violate all the rules and continue functioning. You have given 60 crore to the Delhi government to build a trauma center in Delhi. I want to know, where is that 60 crore, which now, given in 2015, is about 90 crore. So instead of rewarding the governments, you are actually making them more richer. And I don't know where these. Can I ask you something? You opened by saying you feel you have failed. To see what has happened in Delhi, 3 young lives lost in this manner, you feel you have failed. Are you trying to say that your fight, you couldn't save your own children, and today you're feeling you can't even save other children? Absolutely, Barkha. My whole fight was not to save, because my children already died. The entire endeavor I made was because I said, what I have gone through, I don't want other parents to go through, because I know what it means to live without your children. It's a terrible thing.
Nothing, everything else you can, manage. But losing your child, no parent should ever outlive their children. That's what I always say. So my endeavor has been to ensure that no other parent has to go through it. But when I see these young lives being, stuff like that, I feel miserable. I just wonder what these. I can actually empathize with those parents, and I'm wondering what they're going. I can imagine what they're going through. But very unfortunate. They'd be expecting that they'll get justice, but Yeah. I don't want to, give them false hope, because I know in our country, justice is always denied. It's not delayed. That was a cliche which was used earlier. Now it's justice is always denied to us. But more so if the owners are rich and powerful. It's very upsetting to hear you, Neelam ji, because you speak as a mother who's lost her 2 children. And today I'm thinking of the mothers and the fathers of these 3 children. They're all in their early 20s. Khemchand ji, क्या बोले तो क्या बोले, सब नेता आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस. जो बच्चे सड़क पे बैठे हैं, मैं उनको मिल के आई, वो कहते हैं पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरा सिस्टम ब्रोकन है. वी आर नॉट होपफुल ऑफ जस्टिस. खेमचंद जी, आप क्या कहेंगे आज? नमस्ते. देखिए, मन बहुत दुखी है. हम लोग भी मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, गांव से आए हैं. हम लोगों ने भी दिल्ली में आके स्ट्रगल किया और अपने आप को स्टेब्लिश किया. और दिल्ली में जब इस तरीके के बच्चे आते हैं तो गांव में जो पेरेंट्स भेजते हैं तो अपनी जो गाड़ी कमाई है उसमें से पैसे निकाल के भेजते हैं, और उनकी बहुत उम्मीदें होती हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली जाएंगे, अधिकारी बनेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, चित्त का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे. और उनके साथ ये 3 बच्चे नहीं है. पिछले हफ्ते ही पटेल नगर में एक बच्चे की मौत होती है करंट लगने से. उससे कुछ दिन पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले, लगभग 2 से 3 और लोग मारे जाते हैं. तो दिल्ली अब हादसों का शहर बन चुका है. क्यों? ये दिल्ली कुछ साल पहले तक, 8 से 10 साल पहले तक कम से कम इस तरीके से हादसों का शहर नहीं था. और अब हादसों का शहर क्यों है? जो सिविक कम्युनिटीज हैं, बेसिक कम्युनिटीज हैं, वो पूरी तरीके से चरमरा गई. There is nobody who can take care of. There is nobody who can control. There is nobody who is monitoring. There is nobody who is taking the responsibility of the basic work or compulsory work. यही दिल्ली अप्रैल, मई, जून में पानी के लिए तरस रही थी. और एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि भाई पानी नहीं है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, यूपी पानी नहीं दे रहा है, पंजाब पानी नहीं दे रहा है, या फिर हिमाचल से पानी नहीं मिल रहा है. अब पूरी दिल्ली में पानी हो रहा है. और इस दिल्ली में पानी भी बरसता है. हजारों यहाँ पे पार्क हैं. If there is a proper planning, this water can go to the land, deep land, which can retrieve back into April, May and June when it is needed. दिल्ली में यहाँ पे आपके समय, आपने तो मेरे से ज्यादा दिल्ली देखी है, यहाँ बहुत सारी झीलें भी थी जहाँ पानी को प्रिजर्व किया जा सकता है. अब बात आती है कि we need a better new system which can take away the water from the Delhi, but उसको तो भूल जाइए. आप बेसिक काम नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, आप नालों की सफाई नहीं कर रहे हैं, आप सीवर की सफाई नहीं कर रहे हैं, आप जो एमसीडी के नाले जो पानी को कॉलोनी से निकाल के बड़े नाले तक ले जा रहे हैं उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं. तो ये तो पूरा सिस्टम का फेलियर है. एक गांव में कहावत होती, अंधे नगरी चौपट राजा. दिल्ली में सरकार चल रही है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इन अ जेल. ही डोंट वांट टू लीव द जॉब. ही डोंट वांट टू ट्रांसफर और डेलीगेट द रिस्पांसिबिलिटी टू समबडी एल्स. इवन झारखंड में ऐसा हुआ, उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी किसी दूसरे को डेलीगेट की. When it's out, then he again took over. But उनको यहाँ पे विश्वास ही नहीं है. खेमचंद जी, आप आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराते हैं. वो कहते हैं आपने हमारे को कोई पावर्स के साथ छोड़. मैं बिल्कुल दोषी ठहराता हूँ. यहाँ पावर की जरूरत ही नहीं है बरखा जी. यहाँ बेसिक काम कराने थे, या नाले की सफाई करानी थी, सीवर की सफाई करानी थी. उसके लिए इनको क्या पावर चाहिए? इनको क्या प्राइम मिनिस्टर की पावर चाहिए या यूएन के जनरल सेक्रेटरी की पावर चाहिए? आप मेरे को बताइए. एक सीवर साफ कराने के लिए, एक नाला साफ कराने के लिए. और ये जो हादसा हुआ है, ये मेयर साहिबा के घर से आधा किलोमीटर दूर हादसा हुआ. लास्ट वीक भी बारिश में जो करंट लगने से बच्चे की डेथ हुई है, वो भी आधा किलोमीटर मेयर साहिबा के घर से. आज आप पूरी दिल्ली में देखिए जो टूटे हुए वायर हैं, इवन 80 to 90% कॉलोनीज हैज दैट प्रॉब्लम. अननेसेसरी वायर, कट वायर्स, दे आर एवरीवेयर. आपने एक सवाल किया और वो मुझे वैलिड सवाल लगता है कि एक सुअर को साफ करने के लिए क्या पावर्स चाहिए.
रीना जी, ये जवाब आपको देना होगा कि what is the power? I can understand there's a tussle. You feel that your government has been emasculated. You feel the Lieutenant Governor's office has the powers. Supreme Court में भी झगड़े चल रहे हैं. केजरीवाल जी जेल में हैं. But this is drainage. This is drainage. This is what happens in every rain. The drains get blocked and backflow होता है. घरों की basements flood होती हैं. हम लोग उनको साफ कर लेते हैं. यहाँ पे इलीगली इस बेसमेंट में, प्लीज पानी के शॉट्स दिखाइए, इलीगली बेसमेंट में ये जो फ्लड आया, ये फ्लड इसलिए आया क्योंकि जो कोचिंग सेंटर था ये बेसमेंट में होना ही नहीं चाहिए था. बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट that basic drainage is missing in the national capital of India. Why do you need special powers for drainage? Reena ji, please. बरखा जी, पहले तो बहुत ही दुख भरा हादसा हुआ है. आई एम अ मदर माई सेल्फ. आई कांट इवन बिगिन टू इमेजिन कि वो माँ बाप पे क्या बीत रही होगी. और आज का दिन बिल्कुल गंदी राजनीति करने का दिन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं सजेस्ट किया. वही गंदी राजनीति. मैं एक एक डिटेल में आप सारी बातों का जवाब दूंगी. पहली बात तो ये कि दिल्ली में जितना अभी तक इस घटना के बारे में पता चला है, दिल्ली में कहीं पे भी बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है. ये जो कोचिंग सेंटर था, इनको अप्रूवल मिला था सिर्फ स्टोरेज क्रिएट करने का. उन्होंने कब वहां पे लाइब्रेरी बनाई, कब वहां पे बेसमेंट में क्लासेस शुरू करी, उसमें कौन कौन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था, उसकी तहकीकात होगी. उन सबको सस्पेंड किया जाएगा. अगर आप देखें 2021 में फायर एनओसी मिली है. फायर एनओसी भी सिर्फ वहां पे स्टोरेज के लिए मिली है. लाइब्रेरी क्लासेस की कोई भी फायर एनओसी नहीं मिली है. अब आपको भी पता है कि पूरी दिल्ली में इलीगल बेसमेंट्स बने हैं. 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चला रही थी. ये बेसमेंट्स पिछले 1 साल में नहीं बने हैं. ये सालों साल से ये बेसमेंट बने आ रहे हैं. पहली बात. दूसरी बात, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम शैम्बल्स में है. 15 साल एमसीडी में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो पैसा ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खाया. 1 साल में आप दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम चेंज नहीं कर सकते. ये तो एमसीडी की बात रही. अब आप आइए कि दिल्ली में सरकारी ऑफिसर्स, आज सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कल भी हमने कई सारा डेटा पब्लिक डोमेन में रखा. फरवरी के महीने में मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मॉनसून की तैयारी शुरू करिए. उसके बाद नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी, मीटिंग करके उसके बाद 5 बार वो रिमाइंडर भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे सेक्रेटरीज को कि आप मुझे दिखाइए कहां कहां डीसिल्टिंग हुई है. शो मी द प्रूफ दैट यू हैव डन डीसिल्टिंग. क्योंकि मीटिंग में अधिकारी बोल रहे हैं 80% से ज्यादा डीसिल्टिंग हो गई है. मंत्री सबूत पेश करते हैं कि डीसिल्टिंग नहीं हुई है. मंत्री बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए. ये सारा पब्लिक डोमेन में है. ये बात जग जाहिर है कि दिल्ली को डिफंक्ट करने की कोशिश एलजी के माध्यम से पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है. आप मुझे एक स्टेट दिखा दीजिए जहां किसी मंत्री ने 5 चिट्ठी लिखी हो चीफ सेक्रेटरी को कि मुझे डीसिल्टिंग दिखाइए. ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. आप गुड़गांव चले जाइए, आप नोएडा चले जाइए, आप वहां का डीसिल्टिंग का डेटा मुझे दिखा दीजिए, आप वहां का वाटर सबमर्जेंस देख लीजिए. तो ये भारतीय, आज का दिन बिल्कुल राजनीति करने का नहीं है, स्पेशली बिकॉज नीलम जी इस शो पे हैं. मतलब उनको ये लग रहा है कि मैंने इतने साल जो तपस्या करी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला. मैं तो आज डंके की चोट पे कह रही हूं कि दिल्ली के सारे ऑफिसर्स, उनको सस्पेंड करना, उनको ट्रांसफर करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एलजी कर सकते हैं. हमारी सरकार नहीं कर सकती. आप पता करिए किस किसने डीसिल्टिंग का पैसा खाया है. आप में हिम्मत है, अगर एलजी महोदय के
लेवल तक Okay. वो करप्शन नहीं है, तो आप सस्पेंड Okay. करिए सबको। क्यों नहीं आप suspend करते? Khemchand ji, brief response, and I want to play out some statements of the students. Khemchand ji, please. देखिए बहुत दुख होता है। राजेंद्र नगर में पार्षद कौन है, इनसे पूछिए, आम आदमी पार्टी का है। वहां से एमएलए कौन है, आम आदमी पार्टी की है। एमसीडी मेयर कौन है, आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली में सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की है। और मैं इनसे ऑन द रिकॉर्ड चैलेंज करता हूं, क्या इन्होंने कोई ऐसी पीसी की कि अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, नालों की सफाई नहीं कर रहे हैं, सीवेज की सफाई नहीं कर रहे हैं और हम काम नहीं कर पा रहे? कोई भी पीसी की, मैं को चैलेंज करता हूं, कोई पीसी नहीं की। आपके पार्षद कहाँ गए? अगर काम नहीं हो रहा था तो क्यों नहीं धरना किया, क्यों प्रदर्शन नहीं किया? आपने पिछले 6 महीने में लगातार धरना प्रदर्शन किए, लगातार आप पीसी कर रहे हैं। एक ही दिन में 3-3, 4-4 पीसी करते हैं, क्यों नहीं की? क्यों आपके एमएलए ने ये विषय विधानसभा में नहीं उठाया? क्यों आपके एमपी ने ये विषय, संसद चल रही थी उसमें नहीं उठाया कि भाई दिल्ली डूब सकती है, दिल्ली में हादसे हो सकते हैं, दिल्ली में हर जगह तार टूटे पड़े हैं, दिल्ली में हर जगह गंदगी हो रखी है, दिल्ली में सफाई नहीं हो रही है, दिल्ली के सीवेज साफ नहीं हो रहे हैं, दिल्ली के एमसीडी के नाले साफ नहीं हो रहे हैं? क्यों किसी ने नहीं उठाया? क्योंकि नियत नहीं है, काम करा ही नहीं है। Okay. जब हादसा हो गया, जब हादसा हो गया है, दिल्ली वाले थू कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हम एमसीडी, तो हम डालते हैं। एक मिनट, ये हमें याद रखना होगा कि ये जो शो है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति तक रिड्यूस ना हो जाए, क्योंकि हम जो बच्चे सड़क पे बैठे हैं उन वी विल बी डूइंग अ डिससर्विस टू देम। मिस्टर आजाद, यू वर वांटिंग टू कम इन एंड देन प्रणव, आई होप योर नेटवर्क इज स्टेबल। ओके, 10 सेकंड्स। हाँ बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए। देखिए, वो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बच्चे क्या मांग कर रहे हैं कि एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करिए। उन बच्चों ने कोई राजनीति नहीं कर रही है। वो बच्चे जब आज एलजी वहां गए, एलजी को वहां से भगाया उन्होंने कहा यार राजनीति करने के लिए मत आइए। बच्चे स्मार्ट है, उनको पता है कि जीएनसीडी एक्ट के थ्रू किस तरह दिल्ली में मिसमैनेजमेंट प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। तो इस शो पे भी हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिल्ली में अगर कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, अगर कर्मचारी सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ एलजी महोदय रिस्पॉन्सिबल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं डेट पढ़ के सुनाती हूँ। 28 जून को बैठक में सवाल किया गया सौरभ भारद्वाज ने, 23 फरवरी को बोला, 5 जून को चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि आप मुझे when you did the PC, you are continuously doing 2 to 3 PCs in Delhi. When you did a PC on this subject, when your MLA raised this, when your MLA raised this into the Vidhan Sabha, when your MP did it, no MP raised it, no MLA raised it, no Parshad raised it, no PC is being done. Why you are lying? I'm going to have to shout Shame now. on you. 1 minute. Acha, please. Now both of you have spoken at length. Let other people speak. Mr. Azad and then Pranav, if your network is stable, we'll get you. Mr. Azad, Yasho Azad, please, can we listen to him? Can we unmute him, please? Yeah, Mr. Azad, please. Barkha, let us maintain the sanctity of your program. It is a very, very shocking incident. And, I made an opening statement very brief because you said opening round. I didn't know otherwise. Let's just talk about what exactly has happened. First thing which I want to say, Barkha, is that institutions should work sans politics. The job of the MCD, the job of the Jal Board Statutory Authority, the job of the PWD, it should run, irrespective of whichever government is in power. The notoriously corrupt MCD, whether it is under AAP, whether it is under Congress, whether it is under BJP, is the same. Let me tell you 2 things about this case. I have been to Rao Studies Circle and other circles for taking classes of these or taking interviews. And I have seen how that area has jumbled up and there are thousands of people crammed where only hundreds can be. This is the feature of Delhi. This is irrespective of the governments. The MCD, yes, the poor boy gave a notice. Nobody did anything. But most important, there I agree with Reena ji, that, why didn't the owners respond? It is their biggest fault. They said, okay, the authorities are not coming in, but the children's lives are so important, we should close it down. Rao Study Circle has enough money and they should have acted immediately. Now, regarding the functioning of these institutions, just let me tell you, there is a simple wire
in Nizamuddin East outside my house through the trees, and I said there'll be an electrocution, so please do something about it. And I wrote to 5 agencies, none of them responded. Now, this is how they respond. If given to me, I would have thrown out the Lieutenant Governor, I would have thrown out the Chief Secretary, I would have thrown out the MCD Commissioner. And then I would have talked to these political bosses that you have destroyed Delhi because of your fights amongst you two. Jal Board is in a scam. The councillors don't want to work. They have made themselves a kind of a nyaya giving authority. That is why nothing functions. The mayor doesn't have power. I've met her. She's a decent lady, and nobody has nothing. When the officers don't listen to chief minister, when the governor looks at more file all the time and doesn't look at anything else, this is what is. I have a question. I have a brief question because Pranav has been waiting to speak. You said if it were you, you would throw out the LG, MCD Commissioner and the Chief Secretary. What about political accountability? Because please remember that Mr. Kushwaha, the IAS aspirant who did the warning, he wrote to everybody. He wrote to center, state, local administration. He wrote to everybody. Yeah, sure. Political accountability is zero. That's exactly what I have told you. Political accountability, if it was there, then you would have combined together to do so many things. Think about the stray dog menace or the monkey menace. These are very, very important things for the people. Nothing has happened on this count. This is a huge thing which has happened and happens repeatedly. Nobody wants to take that responsibility. Let me, Pranav, I hope we can, your network is stable. Please go ahead. You're a lawyer, you're a resident of the same area where this has happened. Do go ahead. Barkha, I just want to say that how the political dispensation is working and the authorities are working along with the police and the coaching center. It is like an organized route and a legalized plunder, because everyone is in this mess, because the police chowki is just outside Rao Institute. Whether the police doesn't know that the basement is running illegally, whether the police doesn't know that the Rao Institute and other institutes who are just adjacent to that Rao Institute is running the basements illegally, whether the MCD never inspected that institution or any other institution. Aam Aadmi Party is in Delhi since last 2 years. Before that, it was BJP. So they cannot say that BJP was there from last 15 years. We were just new. I'm sorry. If you see the before that, it was Congress. Before Aam Aadmi Party at the state level, it was Congress, not BJP. In the MCD, I'm saying that. MCD, in the MCD. Party. Yes. Before it was BJP. But if you see the February 2024 MLA fund letter by the Rajendra Nagar MLA to the authority, if you see that letter, it is showing that 11 lakh was being allocated for the drainage distillation. Drainage की सफाई के लिए साफ वहाँ लिखा था, but how much is being spent? Around 1.5 lakh only in February 2024. And in the meantime, we must focus on the fact that these young 2 girls and boy, the children for people of our age, they've taken loans. You saw that on your screen. बहुत से बच्चों ने loans दिए हैं, Pranav, to get through these coaching classes that are really profit-making factories. Now, I'm glad you brought up the role of the police, because a lot of the kids I met today, they used one line. They said, police to vasuli, unke liye to sab vasuli hai. Their pockets are being lined. So you are calling. So basically what I am hearing is, whether it's the MCD, whoever's in control, whether it's the police, reports to the center, whether it's the MLA, it's the MP, and these are across parties. I couldn't, I have no interest in this party or that party. I think students also feel like that they have been trying very hard, and I watched it happen today, that even when the political student unions came to the protest site, they were the jhagda, because they said, we don't want this to become BJP, AAP, Congress, we are not interested in that. Now I'm going to play out 2 statements for you. They reflect how this anger with both sides of the political spectrum. The first has questions of the Aam Aadmi Party and says no one is taking responsibility. This young man, please listen to him.
मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि कोई रेस्पॉन्सिबल, एक हादसा हो जाता है बट कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हम एमसीडी से जवाब मांगते हैं तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। हम दिल्ली गवर्नमेंट से जवाब कहाँ से मांगे जब चीफ मिनिस्टर खुद 2 महीने से जेल में है, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर से हम कोई जवाब मांग नहीं सकते। मैम हम एलजी से जवाब मांग नहीं सकते क्योंकि वो कह देते हैं कि ये एमसीडी के हाथ में है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांग नहीं सकते क्योंकि पुलिस फोर्स उनके हाथ में, और पुलिस फोर्स हमें यहाँ पर बैरिकेड लगाकर वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लगा रहा है कि जहाँ हम आगे ना बढ़ पाए। तो आखिर हम जवाब मांगे किससे? कहीं कोई मौत हो जाती है, आखिर इस मौत का कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। आखिर मैम मेरे घर आया हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे घर से आते टाइम मुझे एक बात कहा था, बेटा मुझे नहीं पता कि अधिकारी बनकर आएगा नहीं आएगा, मैं मेरे बेटे को जैसा भेज रहा हूँ मुझे वैसा वापस सही सलामत मेरा बेटा चाहिए। मैम एक मेरा साथी नीलेश राय खत्म हो जाता है, 5वां अटेम्प्ट पहला मेस लिख रहा था, क्या उम्मीद है घर वालों को? जो वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रिक्यूशन में, जो इलेक्ट्रिक्यूशन से खत्म हुआ था उसके 3 दिन बाद ही में एक हादसा होता है कि यहाँ पर 8 से 10 कैजुअलिटी हो जाती हैं और अभी तक 3 कैजुअलिटी केवल गिनाई जाती हैं। ना तो दिल्ली गवर्नमेंट से यहाँ कोई, मैम चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है तो उनका कोई तो नुमाइंदा होगा, या पूरी दिल्ली राम भरोसे चल रही है? दिल्ली में चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनका कोई तो नुमाइंदा हो जो तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी गुस्सा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुस्सा है, प्रधानमंत्री से भी गुस्सा है, और ऑफ कोर्स कोचिंग सेंटर के जो मालिक है जो अरेस्ट हुए हैं उनसे तो बहुत ही गुस्सा है, पुलिस से भी गुस्सा है। क्या दिल्ली राम भरोसे चल रही है? ये सवाल आम आदमी पार्टी के लिए है, लेकिन एक मिनट प्रणव, लेकिन ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है बच्चों में कि हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले हमारे लिए। प्लीज टेक अ लुक। The Prime Minister, we expected the Prime Minister to at least issue a tweet, at least to make a tweet that I stand with the students, I stand in solidarity with the students. Ma'am, he is silent on this issue. We didn't expect such a great Prime Minister, such a high stature to do this, ma'am. So the students here want the Prime Minister to speak. They say, why hasn't the Prime Minister spoken yet? He is the leader of the country. This involves young lives. और ये भी मैं बता दूं कि यहाँ कुछ दिन पहले ये हादसा होने से पहले, ये किलिंग्स होने से पहले एक और आईएएस एस्पिरेंट थे जो वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रिक्यूशन में मारे गए, वो सड़क पे हुआ। हमारे प्रधानमंत्री इतने स्टैचर के हैं, क्यों नहीं बोल रहे? केजरीवाल जी जेल में है तो आम आदमी पार्टी के मंत्री कहां हैं? दीज आर किड्स हु आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एज दे शुड। मिस्टर आजाद, यू हैव बीन अ पुलिस ऑफिसर, दे आर आल्सो आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द पुलिस। पुलिस के लिए उनके 2 सवाल है। एक ये कि हमने 6:40 को हेल्प के लिए फोन किया, हमारी हेल्प बहुत लेट आई, उसमें पुलिस की भी जो हेल्प थी वो बहुत लेट आई, 3 घंटे लेट आई। लेकिन दूसरा, इफ वी कैन प्ले द पिक्चर्स दैट द किड्स हैव शेयर्ड विद अस, दे हैव फिल्म्ड व्हाट दे alleges पुलिस ब्रूटैलिटी। दे से कि एक तो ये दिस ट्रॉमा दैट वी आर गोइंग थ्रू, secondly, when we are protesting, they have released videos saying that the police has used excess force. There are videos in which you can see the police is dragging away. You can see that they're dragging away a protester, and many such videos are going viral. And of course, they have accused the police of corruption, of looking the other way as these illegal basements thrive. Yashwazad, I'll start with you. Well, I don't know how much of a role police has in these basements, because it is basically the MCD's job. But sure enough, I totally agree with you. The police should have handled it more sensitively, and it is incumbent upon them in a situation like this not to be very, very harsh in their treatment. And but you know, in a case like this, it's very unfortunate. The Inspector Raj that we have, it is extremely, I mean, unfortunate. That's all what I mean. But I'll tell you another thing. This is such an institutionalized corruption, because the lower hands of the police, the MCD, also know that nothing will happen. No higher authority will take any action. I would take action, as somebody said very rightly, against the MCD. What do they do? Why doesn't the MCD commissioner come and give a statement about these basements, whose job it is to see that? I mean, why doesn't he resign? To start with, why hasn't he resigned? Yes, absolutely make to resign. That's why I said that I'll throw out these 3 top guns first, and then ask for the accountability from the political leaders. I want to get Pranav and Neelam in. Neelam, you heard the kids. Kids are very sensible. Kids are saying, हमें नहीं करना राजनीति. खेमचंद जी और रीना जी करें आर्ग्यू. हमारे को तो सब साइड से सवाल है, सब साइड से डिसअपॉइंटमेंट है. हमें चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी जवाब दे, और हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए बोले. पार्लियामेंट में आज डिस्कशन हुई. धर्मेंद्र प्रधान जी, मुझे कहना चाहिए कि जब मैं इन स्टूडेंट से मिली तब मिस्टर प्रधान नहीं बोले थे. मेरे जाने के बाद एलजी भी वहां पहुंचे. मुझे ये 2 चीजें साफ बोल देनी चाहिए. लेकिन फिर भी होता है. मैंने मणिपुर में भी ये देखा. पीपल वांट टू हियर फ्रॉम द टॉलेस्ट लीडर.
You know, young people, they feel you take us seriously. We want to hear from the Prime Minister. Neelam ji? I think they're absolutely right, Barkha, because it's the responsibility of the Prime Minister to reach out to these young children, and they're all aspiring to be IAS officers. And unless, you empathize with them, and tell them that we're going to take some action, you have to, actually comfort them, because otherwise, how are these children going to continue with the classes, you tell me? Because they're going to have a fear. Whenever they go for classes, they'll always have the fear in the mind. Ki, Arey yaar, yahan kuch ho to nahi jayega. I mean, today it was this. Tomorrow it can also be a fire. It can be anything in the basement. And with one entry and exit, why aren't they not taking any actions? You please tell me. There are 2 points, Barkha. Number one, why do they turn a blind eye when these places are being run? And we should stop passing the buck. And this is what happens in all the tragedies that happen in our country, that they pass on the buck, one department to another, and no action is ever taken to any of the government departments. So let's stop that and actually come in down. fact, Neelam ji, some point that you were making, can we come out of these pictures, please? Some point that you were making will resonate with you. We have Saraswati Iyer in the audience saying, if you want politicians to behave, fix the compromised justice system, fix the compromised institutions. Politicians will continue to misuse it. People will continue to suffer. I'm sure that resonates with you, who had to fight, 26 years before you could get the first order of significance? Absolutely, Barkha. That's why I was just going to come to you for that. For this, it is very important that we have a criminal justice system and give speedy justice. And the cases are decided in 1 to 2 years, and these people are sent behind bars. Unless that happens, they're not going to learn. A mere suspension is not the solution. That's why it's saying. And among the absurd things that has happened today, कहा जा रहा है कि the water went into the basement because the black SUV was driving at a certain speed through the water. The black SUV has been confiscated. That driver has been there's the black SUV. ये वाली गाड़ी impound हो गई है. अभी MCD में कोई नहीं heads roll हुए, लेकिन ये वाली गाड़ी impound हो गई, इसका driver arrest हो गया. Pranav? Foolish. Yeah, it is foolish. This is absurd. About that, it's very a scapegoat, I would say, the SUV, because if you see the Aam Aadmi Party councillor, who is the representative of Rajendra Nagar, I'm also a resident of Rajendra Nagar. We have brought before her many times that there are drainage issues. Every year it happens, and she is just missing. Her office is shut. The MLA is missing. The MP has come for 5 minutes on the date of the incident. Now she's also missing. The students demand, I'm visiting the protest site daily. The students only demand two to three things. That is the presence of the commissioner, MCD commissioner before them. Secondly, the accountability of the owners. And thirdly, that the accountability of the erring officers should be fixed. Suspension of JE and assistant engineer would not help. They want answers from the high authorities, like the commissioner of the MCD, the MLA, the councillor, to whom they have given representation several times. But so Pranav, is it fair to say that all sides have failed the students, the AAP, the MCD, according to Mr. Azad, the LG's office, सबने देखिए जिसने Mr. Kushwaha की warning ignore की, जून की लिखी हुई 2 रिमाइंडर्स, वो सब कल्पेबल है, उसमें सब शामिल है. खेमचंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन रीना जी, आपके लिए भी सवाल उठे हैं, स्टूडेंट्स ने उठाए हैं. खेमचंद जी से शुरू करते. देखिए, आपने भी जो बच्चों से बात की, बच्चों ने साफ साफ बोला कि दिल्ली में गवर्नमेंट है, वो कहाँ है? चलो सीएम जेल में है, तो सीएम के रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, उनके ओएसडी हैं, उनकी मंत्री हैं. ऐसा तो है नहीं कि मंत्री नहीं है. उनके एमएलए हैं. यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के दिल्ली से चुने गए हैं. कहाँ है? यहाँ से वो एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो क्या दिल्ली के लिए कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? फिर इनकी लोकल काउंसलर, जिसकी ये ड्यूटी होती है कि बारिश से पहले हमें जितने भी ये नाले होते हैं एमसीडी के, उनको साफ कराना है. एमएलए, जिसकी ड्यूटी होती है कि जो जल बोर्ड, क्योंकि जल बोर्ड के अंतर्गत सीवेज डिपार्टमेंट आता है, कि हमें उसको रिपेयर कराना है, उसको बेटर करना है, उसको क्लीन करना है. क्यों वो जवाबदेही उनकी ना फिक्स हो? ऑफिसर्स की तो हो,
लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की पॉलिटिकल जवाबदेही क्यों ना फिक्स हो? क्यों काउंसिल पे कार्रवाई ना हो? क्यों एमएलए पे कार्रवाई ना हो? क्यों जल बोर्ड की आपके सवाल जायज है, लेकिन यशो आजाद जब कहते हैं कि एलजी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब बच्चे पुलिस की बात करते हैं तो उसमें भी आप कुछ बोलिए। जब बच्चे कहते हैं प्रधानमंत्री भी हमारे बारे में बोले, उसके बारे में भी कुछ बोलिए। आप अनम्यूट करेंगे? देखिए, बच्चों ने, मैंने नहीं सुना आपके इंटरव्यू में कि बच्चों के लिए बोला होगा, आप कह रही हैं तो, लेकिन आज संसद में चर्चा हुई है और जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। हमारे कई एमपी, दिल्ली के जो एमपी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया है और हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, पूरी तरीके से इसमें जो बच्चे मारे गए हैं, बच्चों के परिवार के साथ संवेदना रखती है, जस्टिस मिले उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी तय हो। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां पे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको जनता ने चुना, उन्होंने जो बेईमानी की है, उन्होंने लापरवाही की है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। काउंसलर को इस्तीफा देना चाहिए, एमएलए को हटाना चाहिए और जो कंसर्निंग मिनिस्टर है, जो जल बोर्ड की चेयरमैन है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिर कमिश्नर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक घटना नहीं है, एक हफ्ते पहले पटेल नगर में घटना हुई है, उसके बावजूद सीवेज साफ नहीं होते, उसके बावजूद एमसीडी का नाला साफ नहीं होता और फिर आप कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, और इसके लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत फंड नहीं चाहिए, ऑलरेडी फंड आर देयर। कोई इसके लिए, कोई भी इसके लिए पैसा ना, अप्रूवल ना ही कोई बहुत बड़ी पावर चाहिए। एक बेसिक अगर इंटेंशन है, अगर फेयर इनफ, आपका सवाल जायज है। मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि आपके सवाल जायज है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, वो हमारी जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि सारे ही इंस्टीट्यूशंस इसमें कल्पेबल है। आम आदमी पार्टी भी कल्पेबल है, लेकिन बाकी भी कल्पेबल है, ये मैं कह रही हूँ। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अभी आपका यहाँ पे पुलिस कार्रवाई करती है द मोमेंट somebody is going and making the complaint, or MCD is asking we need a because the owner is not letting us inspect or not letting us do the action. तो पुलिस आती है तब हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जल बोर्ड की है, एमसीडी की है, तो यहाँ हम डीटीसी को फैच नहीं कर सकते। Okay, Reena ji, please respond, please, and then the others have to take last comment. So, Reena ji, please, आपने सुना, प्रणव वकील है, वहां के रेजिडेंट है, वो कहते हैं the MLA is missing। MLA को बहुत ज्यादा representations दी गई about this sewage issue, उन्होंने कुछ नहीं किया। And you don't need any special powers to have drains unblocked. The MLA, the minister, everybody has been on the ground, Barkha. Everybody has been monitoring the situation. However, देखिए, आप ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली को डिफंक्ट करने की कोशिश की जा रही है एलजी के ऑफिस के माध्यम से। आप मुझे एक स्टेट ऐसा बता दीजिए जहां पे कि चीफ सेक्रेटरी को 2 एक्सटेंशंस दिए जाएं बिना चीफ मिनिस्टर की रजामंदी के। आज दिल्ली में ये हो रहा है कि जो भी अधिकारी मुख्यमंत्री की या मंत्री की बात नहीं मानते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको एडिशनल चार्जेस दिए जा रहे हैं। पूरा परवर्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिल्ली में क्रिएट करने की आप अपना कुछ अकाउंटेबिलिटी मानती हैं? जैसे मैंने खेमचंद जी को बोला, आप अपनी कोई जिम्मेवारी मानते हैं आम आदमी पार्टी की? मैं तो पूरी अकाउंटेबिलिटी मानती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ एलजी महोदय से, मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आप सस्पेंड करिए ना। किसने पैसा खाया? आपके अंडर में सारी एजेंसीज हैं, आप देखिए किसने पैसा खाया, किसने अलाउ किया ये बेसमेंट में इलीगल सेंटर चलने के लिए। एक को सस्पेंड करें, क्योंकि हमें पता है कि हमने पैसा नहीं खाया, लेकिन जिन भी अधिकारी ने खाया, कमिश्नर ने खाया, करिए आप सबको सस्पेंड। क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं आप? क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं। हमारे ऑडियंस में एक ऑडियंस मेंबर है जो कहते हैं, डियर फेलो स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ऑल पार्टीज विल प्ले ब्लेम गेम एंड दे विल ट्राई एंड डाइवर्ट अटेंशन। नीलम जी, लास्ट थॉट्स। नीलम जी। I've heard everyone saying the LG should resign or the councillor should resign and there should be accountability. I know we're all talking, we want this to happen, but let me assure you, nothing will happen. Neither the LG is going to resign, neither any minister is going to resign, because we don't have this culture of accountability in our country. So what we need is a robust legal system. Instead of changing the IPC into BNS, what the government needs to do is increase the number of court, increase the number of judges,
and make sure that the cases are decided at the earliest. Unless there is a deterrence, people are not going to learn. I strongly believe in that. And nobody is working towards it. I think it's time people start demanding justice. It is because once the victims are dead, their rights are forgotten. It is the rights of the accused that matter, and adjournments, one after another, are given, the matters are delayed, and by the time the matter is decided, the Supreme Court says, all right, you're old enough now, you can walk free. And then they'll tell the victims, if you have suffered, so have they. So if you have this kind of a mindset, what we need to change is our criminal justice system. Let's do I something agree. about I that. agree. I agree with you, but that's not going to happen anytime in the near future. Nothing Pranav, is before I give you, happening. I know. And We're all so so cynical and nothing- jaded. Pranav, last thoughts. Who all do you hold accountable? Everyone Everybody, is accountable. Everyone is accountable, Barkha. Even the state government, the MCD, and the union government as well. Because I have seen education ministers stating that a guideline was issued in 2024, February, to the state governments that such and such regulation should be there for coaching centers, and state government has the power to make regulation accordingly. But the state government and the union government have both failed. They are just doing the blame game, and no one is actually caring about the justice to the people who have died and the families of those deceased. And the number which they are showing of 3 people have been died are also in doubtful. So we are preparing a writ petition. We will file it. Yeah, this is something I heard students say again and again today, that they believe that the number of casualties, we don't know for sure. We do know some injured are in hospital, so we have to wait to see what the update comes from hospital. I do imagine that if anyone is unaccounted for, their families will say something. So I don't think that casualties can be kept hidden for more than a few hours. Mr. Azad, Neelam Krishnamurthy says, "Kuch nahi badlega, kuch nahi badlega." Do you feel that? Well, I think people should keep fighting. I always keep a positive frame of mind, and things will certainly change. Number one, I want to make 3 quick points. First is, why should illegal basements be there? And that is why I'm talking about institutionalized corruption. Why isn't that the councillors or the MLAs or the MPs put pressure on the commissioner, or just threw him out and saying that if you don't do your job, you'll be out? Number 2, second point is, definitely the central government is playing huge politics with the government of Delhi. If you have a chief secretary running on 2 illegal extensions who doesn't listen to the chief minister, this is an idiotic situation in Delhi. And actually, it's a fact when the ministers are virtually begging the secretaries to work and they care a damn. And number 3, I think, Barkha, still, the biggest fault in this case is that of a crass and negligent owner who's running that basement knowing it is illegal. The authorities will take chances later, but a basement which is made like this in monsoon, liable to get flooded, getting all the warnings, and he doesn't close it, he's the one who should be booked for murder. Absolutely. And let's be very clear, Shreya, Tanya, and Nevin, this was not a freak accident. This was homicide. This was criminal negligence. This was knowing, fully conscious criminal negligence. And look at these images and think for a moment, the smiles on their faces, what they must have been thinking in that basement as the water came in, what their families must be thinking, knowing that a warning was sent in June that fell on deaf ears, and that warning complaint was sent to every arm of power, from the center to the state to the MCD. Thank you very much. It's a sad day. Reena ji, Khemchand ji, Mr. Azad, to Pranav ji, and to Neelam ji. In particular, thank you to Neelam ji, because to relive the trauma of losing your your children, and then watching other parents lose their children, I can't even imagine what that feels like. Thank you very much. Take care and see you soon. It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.